Welcome you all. Today we discuss the next question in this unit, that is write note on Lion theory of X chromosome or dysfunctioning or inactivations of the X chromosome, or the question also asks like explain the lionization in X sex determination. So this term, the lionization or lion theory, it is mostly based on the X chromosome. So, first of all, here in this question, we have to write about the introductory part of the sex determination. So, in sex determination, as well as monocytes, in that if the two organisms are particularly present on, then there is called as, if the male as well, they are present in at that at that time called as monocyte. In that there is the different mostly types of chromosome, autosomes and sex chromosome. So again, the sex autosome, that means they can represent the body character, and sex chromosome, they are determine the sex. Ma'am, your That voice means is male breaking. as well as female. This is not clear. Hello. मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. नेटवर्क इशू है, हम it. So here in exam, different questions may be asked on the lion theory, and this lion theory, it is related to the X chromosomes or the in X chromosome. So here at first you have to introductory part of the sex determination, which I have already discussed in question 1. In that we have about the dioecious as well as monoecious species, and in that there is the two chromosomes are present and sex chromosomes. That means they determine characters, and sex chromosome, that means they will sex, that means male sex. In these sex chromosome, there are two chromosome or two types of chromosomes are there: X chromosomes and Y chromosomes. So X chromosomes, they are represent the or XX genotype male and represent the male. As it same the introductory part from question number 1. Then we have, let's move towards the lionization, or is also called as X chromosome dysfunctioning. Dysfunctioning का मीनिंग आप जान, भी फंक्शन है एक्स क्रोमोसोम का वो रहता है वो यहाँ पे तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया है। जो एक्स क्रोमोसोम है कंपैरेटिवली लार्ज साइज है वाई क्रोमोसोम से, तो एक्स क्रोमोसोम इट इज लॉन्ग एंड दे कैरीज मेनी जीन्स कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम की साइज छोटी है, तो उससे कंपैरेटिवली एक्स क्रोमोसोम की साइज जीन्स रहेंगे, वाई क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो कम रहेंगे। बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। फीमेल का जीनोटाइप क्या है? फीमेल जीनोटाइप तो एक्स एक्स जो है वो फीमेल में जीनोटाइप रहता है, पे टू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इन मेल बॉडी, मेल में जो जीनोटाइप है मेल का कैसे है, एक्स वाई जीनोटाइप है, तो वहां पे एक है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है और दूसरा है वो वाई क्रोमोसोम रहता है।
तो ये कंपैरेटिवली देखोगे एक्स 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 और एक्स वाई में, तो यदि फीमेल बॉडी हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे एक्स एक्स है। तो यदि सिंगल एक्स के ऊपर यदि 100 जीन, तो वहां पे टोटल कितने क्रोमोसोम जीन्स रहेंगे, तो वहां पे 200 वहां पे जीन्स रहेंगे एक मेल बॉडी में। तो वहां पे 2 sets of 100 जीन्स उसके बनेंगे। एज कंपेरेटिवली मेल बॉडी दे आर हैविंग द एक्स्ट्रा 100 जीन्स, क्योंकि फीमेल बॉडी में वहां पे एक्स है और मेल बॉडी में सिंगल एक्स है। एक्स के एक्स जो क्रोमोसोम है वो 100 जीन्स कैरी करेगा, तो मेल फीमेल बॉडी है कंपेरेटिव कैरी करेगा, क्योंकि वहाँ पे 2x है, मतलब 200 जीन्स फीमेल बॉडी कैरी करेगी, बॉडी है वो खाली 100 जीन्स कैरी करेगी। तो यहाँ पे इन मेल्स में आप देखो वन सिंगल एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो वहाँ पे 100 ही जीन्स रहेंगे, और वहाँ पे खाली 1 set of 100 जीन्स ही रहेंगे। तो हियर in male body only one, it it requires the single sets of the 100 genes. So in nature what's happen, क्या होता है, there is the inactivations of the one chromosome takes place, or one X chromosomes will be takes place, and these inactivations of these X chromosome is called as lyonization. तो जो फीमेल बॉडी में एक सिंगल 1x जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेट है, वो क्या होता है, जाता है नेचुरली। Naturally, deactivation of this X chromosome is called as nization. The inactivation of this maternal or parental X chromosome will be takes place, and this then described in the Lyon's theory कि एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम रहता है वो नेचुरली किया जाता है, नॉन फंक्शनिंग किया जाता है, दैट कॉल्ड एज लायोनाइजेशन थ्योरी और इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next question or last question in this unit, that is sex. Explain the sex determination in melandrium album. So in this melandrium album, the sex determination जो formula है, that will be quite different. So here this melandrium album, which is also called as silence latifolia. तो पर्टिकुलरली इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। तो जो नाम है, जनरली हमने देखा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम दैट विल बी डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन, और दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दिस नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेक्स जो रेशियो है, जो फॉर्मूला है, दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट। सो in melandrium it is dioecious plant, belongs to the family Lyophyllaceae, and that means what, male and female both the sex are present in plant. So this melandrium plant, it is called family Caryophyllaceae. Then the chromosome number of this melandrium plant, it is 24. So it is in diploid if it is n is equal to 12. Then this melandrium shows the sex, chromosomal sex. So in they have X and Y chromosome. However, mechanism of the determination is quite different. Same like other plant, X Y है, लेकिन जो पैटर्न है डिटर्मिन क्वाइट जो डिफरेंट है। इन फीमेल जीनो of this melandrium plant, it is AAXY, and male GA, sorry, in female genotype it is AAXX, and genotype it is AAXY.
means it is autosome XX सेक्स क्रोमोसोम दैट्स वाई ए एक्स डिनोट करता है तो एटोजोम्स और जो आगे के दो है वो सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ द मेल द वाई क्रोमोसोम्स they play the very important role in sex determination. So here these chromosomes they contain the male determining genes as well as the female suppressive genes. तो जो मेल है दैट इज वाई क्रोमोसोम में वहां पे क्या रहता है कि एक तो मेल डिटर्मिनेशन जीन्स भी उसमें प्रेजेंट है एज वेल एज देर इज द सप्रेशन फीमेल सप्रेसिव जीन्स जो फीमेल सेक्स को सप्रेसिव करने सो individuals will be hermaphrodite that means in that the male body that is AKXY these will be hermaphrodite that means they are there is the formation of bisexual individuals due to the mutations of the chromosome. So, in this melandrium body, the mutations will be take place in these chromosomes, and the hermaphrodite that means the both sex present in the single body. That is that term called as hermaphrodite. So, hermaphrodite individuals will be produced due to the mutations. This mechanism was first time proposed by the scientist Wamke in 1946. Then, due to these mutations in these male bodies or AAXY individuals, the sometimes plants may be diploid, triploid, or tetraploid body will be formed. Diploid there means the double sets of the chromosome. In triploid condition, there is the triple sets of the chromosome that will be observed. टेट्राप्लॉइड में हम फोर्थ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको वहां पे नजर आएंगे so due to this mutation the ploidy level of these chromosome that will be changed. So, irrespective of this ploidy of these chromosomes, the presence of single Y chromosome products or Y chromosomes produce the male body. Thus, the XY that is in XY, then double XY and triple XY individuals will be males. However, if there is a 4XY individual will be hermaphrodite. So here, due to the increasing the ploidy level of the X chromosomes, up to the 3x there will be male will be produced. If there is a four sets of the X chromosome, at that time the hermaphrodite sex will be produced, and hermaphrodite that means male as well as female sex, both sex are present in that individuals. So here these Y chromosomes is equal to the 4 X क्रोमोसोम्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो खाली एक्स क्रोमोसोम का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है जो नंबर है एक्स क्रोमोसोम का वो इस मेलेडियम प्लांट में बढ़ रहा है बट यदि हम कंसिडर करेंगे एक्स और वाई तो दोनों तरफ एक एक ही जीन रहता है बट यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एक तरफ है मेल बॉडी और जो पूरे जो एक्स एक्स क्रोमोसोम का जो सेट है 4x जो एक तरफ रहता है तो हियर this one Y chromosome is equal to the 4X chromosome in case of the hermaphrodite body. In melandrium, the Y chromosome is longer than the X chromosome. हमने अब तक देखा कि X chromosome body long रहती है, Y chromosome short रहता है. But in case it is larger in size and X chromosome is smaller in size. फिगर में आप देख सकते हो. So, Y chromosome they forms a hermaphrodite or heteromorphic bivalents during the meiosis, and due to these mutations that will be present in this plant. And in melandrium,
Uh, Generally, core whorls of organs in both male and female flowers. So sepal, petals, as like the our parts are there. There is the something in case of this internal chromosomal structure, and due to the this sex determination is डिफरेंट बिकॉज इन जनरल हमने देखा है कि जो एक्स क्रोमोसोम बड़ा रहता है वाई क्रोमोसोम यहाँ पे जो क्रोमोसोम बड़ा है मेलेंड्रियम में और एक्स क्रोमोसोम छोटा है तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो वाई क्रोमोसोम है वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है एंड समटाइम्स सेट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम वहां पे हमने देखा कि यदि सिंगल एक्स डबल एक्स या ट्रिपल एक्स सेट है तब वहां पे मेल प्रोड्यूस होते बट फिर जब होंगे तब भी वहां पे फीमेल सॉरी दैट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं सो दिस melanation it is quite different that's why these are included in syllabus. So for MCQs, this part is very important. At this point, so these are two lionization theory or sex determination of melandrium. It is something different in this part are included in your okay on. So only the remaining last part in this unit that is X nuclear genetics that will be remain and they have started in next lecture. ओके देन आई कैन स्टॉप हियर जो भी अभी मैंने स्पीच कंपटीशन के बारे में आपको बताया तो मुझे शाम तक आप जो भी क्लास में आपके जो भी इंटरेस्टेड है सब आप मुझे नाम सेंड करो ठीक है